Assalamu alaikum class. As you know that we are discussing about waves and its different characteristics. Yesterday we have learned about the different types of waves. Today we will discuss how the waves carry energy. Why the waves are termed as carriers of energy. As you know that the term carriers means the thing which can carry. As the carriers of energy, it means the waves can be termed as carriers of energy because they can take energy from one part of the medium to the other part. They can carry energy from the disturbed part of the medium to the undisturbed part of the medium through the particles of the medium. For example, हमने एक रोप की एग्जांपल डिस्कस की थी जिसमें एक एंड रोप का हमने फिक्स रखा, दूसरा एंड फ्री रखा, और फ्री एंड को जब हमने मूव किया अप एंड डाउन तो हमने मजबूर किया, भी हमने फोर्स किया रोप के पार्टिकल्स को टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन. सो वी हैव गिवन आवर मस्कुलर एनर्जी टू द रोप so that its particles began to vibrate about their mean position and we have set them in motion. So a wave pulse can be seen in the rope traveling from the disturbed part to the undisturbed part of the medium, that is rope here. Now we have to see that what are the factors that affect energy. ये जो एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, जो एनर्जी वेव्स कैरी करती हैं एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, वो एनर्जी कैसे इंक्रीज की जा सकती है. सो अ क्वेश्चन कैन बी देयर. आप लोग ये सोच सकते हैं कि व्हाट अफेक्ट्स द एनर्जी. ऐसी क्या चीज़ है जो एनर्जी को अफेक्ट करती है. व्हाट अफेक्ट्स द एनर्जी. The amount of energy carried by a wave is related to the amplitude of the wave. A high energy wave is characterized by high amplitude and a low energy wave is characterized by a low amplitude. So as you understand that, as you know that amplitude is the maximum displacement of the particles on either position of the mean of the rest पोजीशन. जैसे कि क्रस्ट या ट्रफ की हम बात करें तो वो मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस होता है, आइदर ऑन राइट और लेफ्ट साइड, अप एंड डाउन मोशन. इन अप एंड डाउन मोशन क्रस्ट एंड ट्रफ्स आर फॉर्म्ड. So we can say that amplitude is the maximum displacement of particles from their mean position. तो अगर हम किसी वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करते हैं तो इट मीन्स कि हमने उसकी एनर्जी इंक्रीज की है. वी कैन इंक्रीज द वेव एनर्जी बाय इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड. जैसे रोप की ही एग्जांपल अगर हम दोबारा से डिस्कस करें तो उसमें अगर हम अपने हाथ की मूवमेंट को ज़्यादा करें, अगर हम ज़्यादा बड़ा झटका दें या ज़्यादा बड़ा जर्क दें रोप को, तो उसमें एक बड़ी वेव ट्रैवल होगी, ज़्यादा एनर्जी डिस्टर्ब्ड एंड से अनडिस्टर्ब्ड एंड तक जाएगी. सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी carried by the wave depends upon distance of the stretched string from its rest position in case of the string waves. This is the energy in a wave depends upon amplitude of the wave. Hence we can say that the wave energy depends upon amplitude of the wave. Just like that, water waves also transfer energy from one place to another. जैसे हमने वाटर को किसी चीज़ में लेके उसको डिस्टर्ब किया था उसके एक एंड को, तो उस एंड से पार्टिकल्स ने एनर्जी लेकर दूसरे एंड की तरफ, दे वर ट्रेवलिंग फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट. नाउ वी विल डिस्कस दैट वेव्स कैन carry energy, they can move, they can transfer energy, but they do not transfer matter. As we know that the definition of waves is, a wave is a disturbance. A wave is a disturbance that transfers energy, not matter, through matter or space. वेव एक ऐसे डिस्टर्बेंस है किसी भी मीडियम की दैट ट्रांसफर्स एनर्जी, नॉट मैटर. यहाँ पे एम्फेसिस है नॉट मैटर पे, मीन्स के यहाँ पर वेव जो है दैट कैन ओनली कैरी एनर्जी बट इट द मैटर इज़ नॉट मूविंग थ्रू मैटर और थ्रू और
स्पेस। इट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात हो रही है और स्पेस में कि मैकेनिकल वेव्स जो हैं वो मैटर में ट्रैवल करती हैं। वो भी जब ट्रैवल करती हैं तो एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड की तरफ लेकर जाती हैं, लेकिन मैटर को मूव नहीं करवाती। और स्पेस मीन्स कि जैसे हीट या लाइट वेव्स हैं, दे कैन कैरी एनर्जी, दे कैन कैरी लाइट और हीट एनर्जी फ्रॉम सन टू अस, दे कैन पास थ्रू स्पेस, बट दे आर नॉट taking the matter with them. The waves are not taking matter with them. So it is important to know that the waves move through matter, the medium. The particles of matter do not move along with the wave. Only the energy that produces the waves move with the wave. Particles just undergo vibratory motion about their mean positions. So we can say that the matter is not moving because the particles of matter are not moving along with the wave. They are just undergoing vibratory motion about their mean positions. Hence we can say that energy is transferring from one end to the other but not the matter. So can waves carry matter? यहाँ एक और क्वेश्चन आपके जहन में आ सकता है, कैन वेव्स कैरी मैटर? क्या वेव्स मैटर कैरी कर सकती हैं किसी भी केस में? इन अ वेव फिनोमिनन एनर्जी कैन मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, येट द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मैटर इन द मीडियम रिटर्न टू देयर फिक्स्ड पोजिशन। जो रेस्ट पोजिशन थी मीडियम के पार्टिकल्स की वो मेंटेन रहती है। वो पार्टिकल्स वाइब्रेटरी मोशन के बाद जब एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है कंप्लीट एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, दे अगेन come back to their fixed position, that is called rest position. So energy can move from one location to another, yet the particles of matter in the medium return to their fixed position. A wave transports energy without transporting matter. Waves are seen to move through an ocean or lake, yet the water always return to its rest position. अगर ओरिजिनली वाटर किसी लेक में या पॉन्ड में रेस्ट पोजीशन पर है, एयर करंट्स की वजह से या उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होने की वजह से, स्टोन फेंकने की वजह से वेव्स जनरेट होती हैं, तो उस एंड से दूसरे एंड की तरफ ट्रैवल करती हैं, लेकिन कुछ देर के बाद दोबारा वो वाटर अपनी रेस्ट पोजीशन पर आ जाता है। हैंस इट मीन्स दैट वाटर इज देयर, इट अगेन कम्स टू इट्स रेस्ट पोजीशन, इट विल नॉट मूव from the disturbed position to the other. The particles just undergo vibratory motion. Here is an example. Here is a water, for example it's a lake. You can see the waves produced in this picture. अगर हम यहाँ पे कोई बोट, पेपर बोट रखते हैं just like this, तो यहाँ पे इसकी अप एंड डाउन मूवमेंट हमें बताएगी, या कॉर्क प्लेस करते हैं तो इसकी अप एंड डाउन मूवमेंट हमें बताएगी कि इट इज़ जस्ट मूविंग विद द पार्टिकल्स दैट आर डिस्टर्ब फ्रॉम देयर मीन पोजीशन एंड दे आर अंडरगोइंग वाइब्रेटरी मोशन. सो अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द कॉर्क or anything else will be due to the up and down movement of the particles of the medium, that is water particles here, and energy is transferred from this disturbed end to the other end. Hence conclusion is that the waves can carry energy but they cannot carry matter from one place to another. Let's move towards the wave equation. Wave equation is actually a relationship between different characteristics of waves, that are velocity, frequency and wavelength of the wave. As you know that waves are disturbance produced in the medium, and that due to that disturbance the waves travel from that disturbed part of the medium to the undisturbed part. So there must be some velocity of the waves, as velocity is given by the formula distance divided by time. In case of waves, if we take the time as the time period of a wave, where the time period of a wave is actually the time taken by one vibration or one complete cycle of the wave to pass through any point. Let's take one vibration or one complete cycle passing from one point
in 1 second. So time can be represented as capital T. So that the distance traveled in that time will be one wavelength. In completing one cycle from passing from one point in 1 second, the distance will be equal to one wavelength. Here you can see that wavelength is the distance between crust, two consecutive crusts. We have taken here as distance between two consecutive crusts. It can also be taken as the distance between two consecutive troughs. So we can replace the distance by wavelength here and time by the time period of the wave here. So in terms of wave, we can write the formula for velocity as v equals to lambda divided by t. But also we know that the frequency and time period are reciprocal of each other. Here lambda by t means lambda wavelength is divided by t, so we can take frequency as 1 by t. The frequency is the reciprocal of time period, hence we can replace 1 by t in this equation by frequency here. So we will have v equals to f lambda. This is the wave equation which shows relationship between velocity, frequency and wavelength. From this wave equation we can conclude that if we rearrange this equation for frequency for wavelength, it will comes out to be velocity divided by frequency equals to lambda, or lambda equals to wavelength equals to v by f. If the speed of the wave is kept as constant, then we can see that lambda is inversely proportional to the frequency. Lambda is inversely proportional to the frequency. It means if the wavelength increases, the velocity will decrease, or if the frequency increases, wavelength will decrease. By drawing the waveform, we can prove it. Let's take a waveform here. The distance between two consecutive crusts give us a wavelength here. You can see this distance, and in this waveform the wavelength is shorter. So we can say that this waveform is having greater wavelength and this waveform is having lesser wavelength. In this case, less number of waves, you can see less number of waves here, and you can see greater number of waves here, as frequency is termed as the number of waves passing through any point. So we can say that this waveform has greater wavelength and lesser frequency, and in this case this waveform has lesser wavelength but greater frequency. It means hence it is proved that the wavelength and frequency are inversely related to each other. These two quantities are inversely related to each other. If we increase the frequency of any waveform, its wavelength will decrease, or if we increase the wavelength of any waveform, its frequency will decrease, and vice versa. Hope you will understand all these. If you have any problem, you can ask.